6 जून, 3 months would have been over by 6 जून, 6 जुलाई, 6 अगस्त, 6 सितंबर। 3 महीने से पहले ही पूरा फ्लाइट टाइम पर लग गई कि नहीं? चारों किताबें खत्म। पेपर 1, एवरी टॉपिक वॉट एवर हैज बीन मेंशन्ड इनटू द सिलेबस आई हैव कवर्ड। और जिसने भी बीएससी एमएससी करी हो, खासतौर पर क्योंकि पेपर 1 इज बीएससी स्टैंडर्ड, एमएससी स्टैंडर्ड वाला पेपर सिर्फ 2 है। पेपर 1 में कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो मास्टर्स लेवल का हो, सब बीएससी लेवल का है। तो बीएससी में जो भी कोर्स करा हो, देखो उससे कितना ज़्यादा पढ़ाया है मैंने किसी भी किताब में, कि मैकेनिक्स हो, कि ऑप्टिक्स हो, कि ईएम थ्योरी हो या थर्मोडायनामिक्स हो, और सारे क्वेश्चन पकड़वा दिए हैं सारे। मार्क्स आएगा कि नहीं आएगा वो आपके लिए कोई कंपटीशन नहीं है। समझ गए भाई साहब? आईआईटी बॉम्बे वाले भाई साहब समझ गए? इसलिए किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन किसके साथ है? खुद के साथ है। सभी लोग एक किताब से पढ़ते हैं, सभी एक टीचर से पढ़ते हैं, पास 7 को होना है, 6-7 को बस, बाकी सबको फेल हो जाए, फेल ही हो जाना है। ये कंपटीशन का नेचर है। और जिनको फेल हो जाना है उनमें से 95% को प्रीलिम्स में ही फेल हो जाना है। तो पहला हर्डल तो है 50 की क्लास में 90% कितना हो गया? 45। मतलब 50 अगर बैठे हैं, 50 में 45 क्या हो जाएंगे जी? प्रीलिम्स फेल हो जाएंगे जी। जब बैच खत्म हो जाए तब एक दूसरे की शक्ल देख लेना हो। जब अगली बार टेस्ट सीरीज की क्लास होगी AITDS 2024, तब देखना कि इस बैच के कितने आए हैं। जो टेस्ट सीरीज देने आएंगे मैं उनको समझ लूँगा कि प्रीलिम्स पास हो गए। 5 एक साल में, अगर अगले साल 24 में अगर 5 आ जाएंगे मैं भाई बहुत खुश होऊंगा। 5 24 में आ जाएंगे, 3-4 25 में आ जाएंगे, 2-3 26 में आ जाएंगे। 3 साल में क्या पास करेंगे? बस प्रीलिम्स। जो प्रीलिम्स पहली बार में पास करेंगे उनमें से बहुत सारे पास हो जाएंगे, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन इस क्लास में से कम 15 लोग मेंस देंगे। लेकिन कितने साल में? 3-4 साल में। ये एक्सपीरियंस है। लेकिन सो स्मार्ट, जब बार बार कहता हूँ स्मार्ट, हु इज स्मार्ट? हु विल गेट अ चांस टू राइट डाउन मीन्स द पर्सन, दैट पर्सन इज स्मार्ट, and that is overall smartness, nothing to do with your physics is good or nothing. फिजिक्स तो चेक करने का जब नंबर आएगा जब प्रीलिम्स पास होगा। तो राइट स्ट्रेटजी, दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स राइट स्ट्रेटजी। एंड जिन्होंने जून का बैच किया है, एटलीस्ट वन थिंग दे हैव डन करेक्ट, दैट स्ट्रेटजी इज करेक्ट। स्ट्रेटजी वाइज टिपिकली पीपल स्टार्ट फ्रॉम the optional, and optional is over by November, and then still you have got 6 full months, December, January, February, May, 6 महीने हैं। 6 महीने में कुछ भी कवर किया जा सकता है। प्रीलिम तो 2 महीने में पास होता है मैक्सिमम। 6 महीने में तो पूरा जीएस ओढ़ा और बिछाया जा सकता है 6 मंथ्स में। कोई जीएस बहुत ज़्यादा नहीं है, जीएस वही है जो मेरे टाइम का था, कोई चेंज नहीं हुआ है, नथिंग। जो कुछ भी जीएस में भी 4 पेपर में बांट दिया, मेरे टाइम में भी वही लिखना पड़ता था। मेरे टाइम का पेपर ज़्यादा कठिन था, 2 ऑप्शनल होते थे, और दोनों ऑप्शनल मास्टर्स लेवल के हैं, 4 ईयर डिग्री कोर्स के बराबर के हैं। 2 ऑप्शनल्स, एक तो एकदम नया सब्जेक्ट होता था जिसको आपको नया पकड़ना है, लोग तब भी करते थे। जीएस तो अभी भी 6 महीने में तो आराम से A to Z किया जा सकता है। तो जिसको भी फर्स्ट, ऐसा नहीं, बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं। अनिकेत हृदय क्वालिफाइड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रतीक जैन क्वालिफाइड द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। वो भी कल बच्चा है जो आया था भारद्वाज, ही आल्सो पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बीएससी पास है, सिर्फ बीएससी पास है। ये सोचो कि बीएससी वाले पास नहीं तो वो भी एग्जाम में बता रहा हूँ। वो जो भारद्वाज है वो बीएससी पास है। ममता यादव पास द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, 600 रैंक आ गई थी उसकी पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में उसको 5th रैंक है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ शी क्वालिफाइड।
तो पास होने वाले फर्स्ट, ये नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस बन जाए, आईएएस भी बन जाते हैं लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। इफ यू आर गुड एंड स्मार्ट, स्मार्टनेस ओनली डेफिनेशन ऑफ स्मार्टनेस दैट यू आर एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स। नहीं यार, प्रीलिम्स तो 0 लेवल है। प्रीलिम्स भी पास करेगा, मेंस भी पास करेगा, फाइनल भी जाएगा, तब वो सही है, सक्सेसफुल आईएएस बन जाएगा। जो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम फाइनल क्वालिफाइंग द एग्जाम मीन्स फाइनल सिलेक्शन मे बी विद द 600 रैंक। गुड, सब कुछ नहीं बचा है। क्या लास्ट टॉपिक क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ what is Maxwell Boltzmann statistics? Ni is a e raised to power minus beta ei. I have taken GI1. Until unless GIs are specified, GIs are taken to be 1. The system is said to be non-degenerate. System can be, every system can be in non-degenerate state. Certain states are always non-degenerate. And whenever GI is non-zero, GI is 1. Non-degenerate system means GIs are 1. I will explain in quantum mechanics what degeneracy. Degeneracy means one energy level, different probability states. So Ni can be written as a e raised to power minus beta i. और ये easily ड्राइव हो जाएगा। फर्स्ट 10 भी ड्राइव कर सकते हो इसको। इसमें GI वाई नहीं डालना है। N1 लेवल, E1 लेवल, N1 पार्टिकल्स, E2 लेवल, N2 पार्टिकल्स, Ni लेवल्स, EI particles. What was the probability? Factorial n upon factorial Ni. Factorial n upon factorial Ni. Ln omega, Ln factorial n upon factorial factorial Ni. Correct? Ln factorial n minus Ln factorial Ni. So आपका हो जाएगा माइनस, कुछ नहीं हो जाएगा Ni Ln Ni. ओमेगा क्या हो जाएगा? Ni Ln Ni. Correct? So डिफरेंशिएट करेंगे तो Ln Ni Dni. Ln Ni DNI और वो अल्फा प्लस बीटा EI. So ln Ni plus alpha plus beta EI, DNI is 0. So DNI cannot be 0. So therefore ln Ni is minus alpha plus beta EI, nothing. Ni is a e raised to power or e raised to power minus alpha minus beta EI. First time ये भी डिराइव हो जाएगा आपको. When degeneracy, due to this degeneracy, that G1 raised to power N1 factor was coming, otherwise that wouldn't have come. Good. There are just this formula. So non-degenerate states I am considering. Just consider two states. And what is A? हाँ ठीक है, A तो n by z है. AI can always write as n by z. Summation Ni is capital N. A summation e raised to power minus beta ei. Summation e raised to power minus beta ei I would have called z partition function. If there is no GI, then z is summation e raised to power minus beta i. So Ni I could have easily written, इसलिए probability है Ni by n is a probability. Ni is n by z e raised to power minus ei by kt. Two levels. Just assume a system having two levels. E1 with particles N1, E2 level with particles N2. E2 is greater than E1. E2 is a higher level, E1 is a lower level. So lower level number of particles are N1. Higher level number of particles are N2. Good. And these populations are at equilibrium when this whole assembly has been brought to a temperature T. Equilibrium populations. Remember, these are what populations? Equilibrium populations of non-degenerate systems. So N1 is what? What is N1? What is N1? Z तो दोनों का सेम ही है. Z तो पूरे सिस्टम का सेम ही है ना. Z e raised to power minus beta E1 plus e raised to power minus beta E2. Z. So N by Z e raised to power minus E1 by kt. ठीक है जी. This is N1. What is N2? N by Z e raised to power minus E2 by kt. ठीक है जी. They are the populations. So if I would have written
N2 by N1, and temperature you know only positive. Temperature states are here positive. So what is this? N by Z cancels out. E raised to power minus E2 minus E1 upon kT. N2 is equal to En1. E2 minus E1 is a positive quantity. Delta E by kT क्या जी? E2 minus E1 is a positive quantity. Temperature is a positive quantity. Temperature in this formula is a positive quantity. If it is so, then what is whole term? N2 is e raised to power minus delta E by kT. That means N2 is your, this is a normal behavior. This is Maxwell-Boltzmann. I have applied Maxwell-Boltzmann statistics. I have written population in the higher energy level is always less than that the ground level. Population at the higher level is less than at the ground level. It is a conventional thing. E2 was greater than E1. Temperature is positive. If in this equation I make T negative, if I make T negative, then what will happen? If T is negative, then this is positive. Delta is already positive quantity. That means N2 is greater than N1. If T is made negative, then N2 is greater than N1, or vice versa. From this Maxwell-Boltzmann statistics, or vice versa. If I say N2 is greater than N1, somehow higher energy state, typically what happens at the normal temperatures? Positive temperature, normal means positive temperature, the way scale you are there. Ground state is more occupied, ground state is having always more number of particles than the excited state. If somehow I am able to reverse the situation, that excited state is having more number of particles than the ground state, then we say that negative temperature state has been reached. But these populations must be equilibrium populations, not that system is taking place, reaction is taking place. For whatever time this thing may be achieved, that higher states are having more population than the ground state, I will say for that time period, negative temperature state has been reached. This is the concept of negative temperature. Equilibrium population has to be more. This phenomena can be called population inversion. Population inversion, then the excited state is having more population than the ground state, and it finds application in the laser design. For amplification of laser, population inversion was playing a great role. For whatever time period this is achieved, we say that negative temperature states have been reached. That is the concept of this. Typically, how these negative temperature states are reached? By implying the magnetic properties of the system. By implying the magnetic properties of the system, I would have called these. This level is mu b energy. Energy, magnetic system means energy is minus mu dot b. Mu is a dipole, b is a magnetic field. Whenever any magnetic material, paramagnetic, ferromagnetic, is kept in a magnetic field, then what is the work? How much is the work done? Minus mu dot b, work done on the system. So minus mu dot b means when their dipoles are parallel, spins are parallel to the field, then it is minus. When they are anti-parallel, it is plus. Plus is a higher energy state, minus is a negative. So you can say this is E1, this is your ET. They are magnetic properties. They are parallel. This parallel configuration, that is anti-parallel configuration. Here it is N1. Here this was N1, this is N2. If somehow I am able to make more number of particles in the more dipoles in the higher energy state by flipping the spin state, spins are parallel, spins are anti-parallel. Anti-parallel is higher energy configuration. So if there are more number of dipoles in that, then for that time negative temperature state has been reached. 1951, Ramsey and Purcell experimentally showed in lithium fluoride crystal by their new NMR, by taking their NMR, this thing was reached for certain minutes, up to certain minutes. Otherwise this was
even in population inversion 1917 Einstein gave the concept of population inversion for laser fabrication, which was realized in 1960 when the laser is fabricated, or before laser is fabricated in 1957. Then this population inversion was experimentally found, and this happens for very limited, very small time period. But in 1951, a lithium fluoride crystal employing this magnetic property, doing with this nuclear magnetic resonance, lithium fluoride crystal, Ramsay and Purcell showed negative temperature state for several minutes. Ramsay and Purcell. That is the experimental demonstration of negative temperature state. So implying the magnetic properties of the system, negative temperature state can be reached. किताब में लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है. There is application. Why? How I have used Maxwell-Boltzmann statistics? Whenever I have written the population for non-degenerate system, then Maxwell-Boltzmann statistics has been reached. From Maxwell-Boltzmann statistics, negative temperature state means higher energy state having more population. Good. And in terms of temperature, how temperature is defined? What is the definition of temperature? Temperature is DE. DE क्या था? DU was TDS minus PdV. So temperature क्या था जी? Del E by del S V N constant. या mu n I भी लिख सकते थे इसको. So 1 by T is typically del S by del E V N. That is how it is defined. Good. Positive temperature state means slope of entropy versus internal energy. Energy content is a positive quantity. This slope is a positive quantity. But when sometimes this slope is negative, entropy versus this diagram, ds versus E diagram, slope is negative. ऐसा होता है. कई बार इस तरीके का डायग्राम होता है. ये जब ये पॉजिटिव है, जब ये निगेटिव होगा ds बाई डी, ये पॉजिटिव है. ये जब ds बाई डी निगेटिव हो जाएगा, then we say negative temperature has been reached. This is thermodynamical definition of temperature. In terms of this. First, in the positive temperature states, what happens? As positive temperatures, as this energy content increases, entropy is increasing. Energy content, higher the energy content, higher is the entropy. Is a conventional. Is a conventional up to this point. Beyond that, whenever entropy decreases by the increase of internal energy, then negative temperature state is reached. And statistically, Maxwell-Boltzmann statistics, that is the situation when the higher energy state will have more population than the ground. This is thermodynamically. This is a reaching of thermodynamically. That is what all about your these things. Now just get, what are these distributions? Ni by Gi. What is Maxwell-Boltzmann? What is formula for Ni by Gi? E raised to power minus alpha plus beta I. Correct? Ni by Gi is E raised to power minus alpha plus beta I. What is Ni by Gi for Bose-Einstein? That is also E raised to power alpha plus beta Ai. Maxwell-Boltzmann, this is what? Minus 1 raised to power minus 1. Correct? What is Fermi-Dirac? Ni by Gi is E raised to power alpha plus beta I plus 1 raised to power minus 1. Good. They are all the three distributions. यही derive किए ना तीनों में. यहाँ पर था ln omega was here Gi by Ni dni. Here it was Gi by Ni minus 1. Here it was Gi by Ni plus 1. That was ln omega. Derive करके दिया था. Reverse. I am just rewriting
लिटिल अपोजिट, उल्टा लिख रहा हूं। ये तो फार्मूले आपको याद थे, अब मैं इसको उल्टा लिख रहा हूं। GI by NI in Maxwell Boltzmann, GI by NI is what? E raised to power alpha plus beta I. What is in Bose-Einstein? That is E alpha plus beta I minus 1 raised to power minus 1, correct? So what I would have written, if I want to get this term alpha plus beta I, then what? Di by Ni plus 1. Same quantity, e raised to power alpha plus beta I. In Maxwell Boltzmann is Gi by Ni. Here it is Gi by Ni plus 1. In Fermi-Dirac, Gi by Ni minus 1. बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जा रही है जी। गुड। कुछ कनेक्शन देख रहे हो क्या तीनों में? वो तो ऊपर वाले फार्मूले थे जो आप फैमिलियर थे, हमने इनको लिखा। इनमें क्या करें? राइट हैंड साइड तो तीनों का सेम है, राइट हैंड साइड तो तीनों का सेम है। क्यों लिखा है? क्या कनेक्शन है इनका? ये क्लासिकल है, ये तो क्लासिकल है। क्लासिकल मतलब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, करेक्ट? क्लासिकल मीन्स distinguishable particles, and these are quantum fundamental difference indistinguishable particles. Who can be converted into whom? Quantum to classical. क्लासिकल नहीं बदल सकता, कौन बदलेगा? क्वांटम। और दोनों क्वांटम क्या है? दोनों को कंबाइन करूं तो क्या है? Gi by Ni plus minus 1. Gi by Ni plus minus 1. If it is Gi by Ni plus 1, Bose-Einstein. Gi by Ni minus 1, Fermi-Dirac. Good. So Gi by Ni plus minus 1 is quantum and Gi by Ni is classical. So when Gi by Ni plus minus 1 can be made Gi by Ni, under what circumstances? Gi by Ni is large. अगर 1 लाख है तो मैं कभी 99,999 या 1 लाख कुछ बोलूंगा क्या? क्या बोलूंगा? 1 लाख ही बोलूंगा ना। If Gi by Ni is large, then quantum distributions always converge to classical. Simplest. We will build up. We will build up. Under what circumstances quantum distributions converge into classical distribution? So if Gi by Ni is large, then even if you use quantum distribution, they are automatically become classical. Gi by Ni is large. Good. So what is the validity of quantum distributions? Gi by Ni is small. If I ask when the quantum distributions are valid, when Gi by Ni is small. Large Gi by Ni, quantum distribution will convert into classical distributions. Good. For large values of Gi by Ni, quantum distributions converge to classical. That means indistinguishable particle will become distinguishable. ये समझाना है. Indistinguishable will become distinguishable. कैसे? देखो, Gi by Ni is large. That means number of Gi is larger than Ni. If Gi by Ni is large, that means who is bigger? Gi is more than Ni. Number of cells are more. If number of cells are more, then I can always assign every cell by name. Like if there are large number of students, then what I do? I will assign the roll number to anybody. And I will name by the roll number. So I will convert indistinguishable particle. If large number of cells are there, I will assign unique number of particle. A unique number, unique identity.
हर एक सेल का एक एक नाम दे दूंगा भाई साहब, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5, बट बिकॉज आई हैव गॉट सफिशिएंट नंबर ऑफ सीट्स, मेरे पास 1 लाख बंदे हैं और 1 लाख सीट है, 1 लाख रोल नंबर क्रिएट कर सकता हूँ कि नहीं? हर एक की यूनिक आइडेंटिटी दे दी। सिर्फ GI इज मोर देन NI, if GI is more than NI, number of cells are more than number of particles, ये indistinguishability will be converted into distinguishability. I will, that is the criteria is used here. Good. So GI by NI is large quantity, then quantum distributions automatically convert into classical. Indistinguishable particles can be also made distinguishable. This is the criteria of distinguishability which is applied. Correct? Now try to appreciate. Try to appreciate under what circumstances. GI is larger than NI. रिवर्स हो जाएगा तो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे. GI is greater than NI. GI किस पे डिपेंडेंट था? 2 pi v by h cube, 2m raised to power 3/2, ये सब बेकार की बात. क्या? एनर्जी. Good. This is function of GI is function of your energy. Good. Although energies were constant. Good. Energies are function of temperature. Higher temperature and n किस पे डिपेंडेंट है? नंबर डेंसिटी किस बात पे डिपेंडेंट है? क्योंकि मालूम था तो नंबर डेंसिटी कह सकता है. व्हाट इज नंबर डेंसिटी? किस पैरामीटर पे नंबर डेंसिटी डिपेंडेंट है? प्रेशर पे. P इज प्रोपोर्शनल टू NKT. P इज आइडियल गैस होती है. आइडियल गैस ही है ना यहाँ पर. वाई आइडियल गैस? All particles are ideal gas because energy is only P square by 2. Only kinetic energy I have considered non-interacting particles. Assumption is that particles are non-interacting. Good. So in ideal gas, PV is NRT. PV is equal to RT, that is P is equal to NKT. P is proportional to N. Higher is the N, higher is the pressure. Good. So when this GI is greater than NI means what? Higher temperature, lower pressure. क्या? NI is small than GI. If GI is greater than NI, that means GI is greater than NI. GI greater, NI is small. GI by NI will become large quantity. GI greater, NI is small. When GI is greater, energy high. Energy high means temperature high and pressure low. High temperature, lower pressure. GI by NI is large. Every distribution is a classical distribution. What circumstances every distribution is a classical distribution? High temperature, low pressure, or higher temperature, lower number of particles. Good. Explained. Under these circumstances, classical quantum distribution converges to classical GI has to be greater than NI. That means at higher energies, when the particles are at higher energy levels, that means they are at higher temperatures and number density is smaller. Number density of particle is smaller, and number density is smaller, that means pressure is low. So high temperature, lower pressure. Validity is, what statistics is valid at high temperature, lower pressure, or number Maxwell-Boltzmann. Every statistic converges to Maxwell-Boltzmann. This is standard I have converted from all of them. समझ में आ गया भाई साहब? How indistinguishable particle has been converted to distinguishability? Because GI is large, every particle can be assigned unique identity, unique cell. यूनिकली आई कैन असाइन. समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कि क्लास में मेरे पास 60 सीटें हैं, मुझे एक का भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है. हर एक को मैं क्या करूंगा? सीट नंबर 1. और मेरे पास यहां लिख कर रख रखा है सीट नंबर 1 में कौन बैठा हुआ है. मैंने क्या बना दिया? डिस्टिंग्विशेबल बना दिया. बहुत सारे लोग रोल नंबर याद कर लेते हैं अपना. मेरा रोल नंबर भला है. रोल नंबर याद करना मतलब डिस्टिंग्विशेबिलिटी है. वी हैव मेड द पर्सन डिस्टिंग्विशेबल. इजीली पर्सन कैन बी कॉल्ड. Then another way, this is another criteria, although I have conversed, this can be written in terms of temperature and number density. This criteria can be also expressed in terms of, already I have explained, higher temperature, lower number density. I can write in other words also. I can write in other words also. What is the de Broglie wavelength? de Broglie wavelength किसी भी पार्टिकल की है h by p. h by p. एच बाई पी क्या है जी? √2m है. और √2m को अगर एनर्जी का पी स्क्वायर बाई 2 तो 3/2 kT मान लूँ. सिंपल वे में मान लूँ कि नहीं? 3/2 kT मान लूँ तो क्या हो गया? मोमेंटम √3m kT. ठीक है जी.
ठीक है जी, क्या हो गया है? थर्मोडायनेमिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल लैम्डा इज h by p. Every particle is equivalent to a wave. I can define h by root p. Non-relativistic p square by 2m is energy root 3 by 2. क्या लिख दिया जी? h upon I could have written kt. kt लिख के अगर सिर्फ kt लिखता है यहाँ पर तो 2m kt हो जाता. Some writers write 2m kt, बट एस.सी. वर्मा की किताब में देखोगे क्वांटम फिजिक्स में तो 3m kt लिखा हुआ है, वही ठीक है. ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है. सो बिकॉज आई हैव टू गेट द जनरल ट्रेंड. सो लैम्डा इज h upon root 3m kt. व्हाट इज दिस? डी ब्रोगली वेवलेंथ. In the central problem was, what was my central problem? Omega n particles, v volume with energy E. Correct? What is the volume available for a single particle? N particles in volume V. N particles in volume V. What is the volume available for single particle? V by N. V by N. Correct? Cubical box अगर मान लूं, एक डायमेंशन क्या हो गया? करेक्ट. 4π/3 r³ मान लूँ या कुछ भी मान लूँ. क्यूबिकल बॉक्स dx dy dz. सो व्हाट इज द डायमेंशन अवेलेबल? वन डायमेंशन फॉर ए पार्टिकल v by n raised to power 1/3. That is the space available for motion of a single particle. While particle is characterized by temperature T, this de Broglie wavelength is dependent upon its temperature. So space available for a particle is what? V by n raised to power 1/3. When it is distinguishable, बताओ. दो क्राइटेरिया मेरे पास, स्पेस अवेलेबल एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ. कौन किससे छोटा होना चाहिए? इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द स्पेस अवेलेबल, देन द पार्टिकल विल बी डिस्टिंग्विशेबल. छोटे छोटे लोग हैं, आराम से देख सकता हूँ. एनफ स्पेस आई कैन आइडेंटिफाई. सो फॉर डिस्टिंग्विशेबिलिटी क्राइटेरिया कैन बी दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लेस देन स्पेस अवेलेबल. करेक्ट? डी ब्रोगली वेवलेंथ. सो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, और देखो लैम्डा लिख दूं. लैम्डा इज लेस देन v by n raised to power 1/3. गुड गुड. ये क्या हो गया? अब क्यूब करूं, क्या हो गया? लैम्डा क्यूब इज लेस देन v by n. ये क्या हो गया जी? n by v. लैम्डा क्यूब इज लेस देन 1. गुड. n लैम्डा क्यूब इज लेस देन 1. n लैम्डा क्यूब इज लेस देन 1. गुड. ठीक है जी. दिस द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विशेबिलिटी मींस वैलिडिटी ऑफ Maxwell classical distribution, classical statistics. n lambda cube is less than 1. Write down the value and see. Write down the value and see. n is the number density. देखो n is the number density. This is the criteria for classical statistics validity. For classical statistics to be valid, n lambda cube must be less than 1. very very less than 1 भी कह सकते हैं. n लैम्डा क्यूब इज लेस देन 1. ठीक है जी. n लैम्डा क्या था हमारा? h अपॉन रूट 3m kt क्यूब लेस देन 1. नॉट इंटरेस्टेड इज सबको n अपॉन t बाई 3. ये जो भी लिखना चाहो लिख लो. h क्यूब अपॉन रूट 3m के, और इसको लिख देता 3/2 लिखना था तो क्या लिखता है इसको? h स्क्वायर. h स्क्वायर अपॉन
3mk raised to power 3/2 is less than 1. Correct? This is the criteria for validity of Maxwell distribution. देखो क्या हो गया, t/3 t raised to power 3/2 is greater than n. t raised to power 3/2 is greater than n. और वाइस वर्सा लिखता है t raised to power 3/2 divided by n into this is greater than 1. So temperature is high, number of particles is low, because this has to be less than 1. That means n has to be less than temperature. Temperature has to be higher, number density has to be lower. From there also I have obtained the same criteria. Gi by Ni, in terms of Gi by Ni large, then that was the validity of your classical statistics. Gi by Ni was large. When Gi by Ni was large, higher energy, higher temperature, lower number density. Same thing here, same thing here. In this criteria, that is another word, the same criteria can be used. So this is the validity conditions. Both the conditions I want to see. Under what circumstances quantum distributions converge to classical distributions, and vice versa. Vice versa, because many of the times I ask reverse. What this criteria is? Criteria for validity of classical statistics. If I say what is the criteria for validity of quantum statistics, then it will be reverse. N lambda cube must be greater than 1, and this will be greater than 1 here. That is the quantum statistics. Because only these smaller things I change, circumstances will undergo a change. When the quantum statistics is valid, quantum statistics will be valid, Gi by Ni should be small. क्या भैया? Gi by Ni should be small, then Gi by Ni plus 1 is a distinct, then Gi by Ni minus 1 is also distinct. So Gi by Ni is small, then the quantum, and Gi by Ni is small, lower temperature, number density is small, and those circumstances only this thing. Very important. Good. This was other thing. See the sheet. First of all, see the syllabus. Is there any topic left out? Read the syllabus. If you have got any question, you can ask me. सिलेबस पढ़ के बताओ सबसे पहले, कोई सिलेबस में टॉपिक रह गया क्या? कहाँ? शुरुआत से पढ़ लो, पढ़ना से पढ़ लो. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको खबर हो गई. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गुड. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, डिटेल में बता दिया. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. एंट्रोपी, isothermal, adiabatic, isobaric, isochoric processes and entropy changes. Otto and diesel engine, Gibbs phase rule and chemical potential. एक्सप्लेन कर दिया. गिब्स फेस रूल एंड केमिकल पोटेंशियल along with applications. Van der Waals equation of state of a real gas. Critical constant. Critical constant. Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities. Maxwell-Boltzmann distribution of molecular velocities. Transport phenomena. ट्रांसपोर्ट फिनोमेना. Equipartition and Virial theorem. विरियल थ्योरम अभी बताते चलो. विरियल, हाँ आगे. Dulong-Pettit, Einstein and Debye's theory of specific heats of solids. करेक्ट. Maxwell relations and applications. Clausius-Clapeyron equation. Adiabatic demagnetization. Joule-Kelvin effect and liquefaction of gases. ठीक है जी, सारा खत्म कर दिया. अब ये कुछ नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं पूछता है. विरियल थ्योरम Clausius. What is real theorem of Clausius? Average of kinetic energy. Capital T denotes. Why the capital T? Capital T is the denotation for kinetic energy. And bar means time average. Average of kinetic energy is equal to minus half of V. V is virial. V is virial. 2T plus V is 0. Also I can say 2T plus V is 0. Time average of kinetic energy is minus half of V. Virial or potential, whatever I want to call. What is this? Minus half. What is this? V. Fi dot Ri. Fi dot Ri. Every term has got their usual meaning. Fi dot Ri. What is Fi? Force acting on the ith particle. Due to this force, what is Ri? Displacement of the particle. This is called virial. Potential energy also you can take in that particular format.
सो टाइम एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस कुड बी आल्सो रिटन क्या जी, 2t plus v is 0. V is called virial. V is called virial. What is virial? Half of this. Virial is nothing Fi dot Ri. And time average. Fi dot Ri. And to explain what is Fi dot Ri, I am easily writing. Equation of motion is what? Mi d2 Ri upon dt2 is equal to what? Fi. Just to explain what is Ri and what is Fi. This also I would have written dpi by इससे ऊपर dpi by dt is Fi. Equation of motion of an ith particle. Equation of motion of the ith particle. If I know the force acting on ith particle, then momentum will undergo a change. Every term has got the Fi, Ri, explain. T is kinetic energy, V is this. It is called virial theorem. This was given by Clausius. So if I know what are the forces acting on a particle, then potential energy or kinetic energy can be, if one is known, if I know the force, virial is known, immediately I can find out, I can write down the kinetic energy is to be half of virial. Proof. I am doing whatever the proof is given by Clausius. Whose proof? Clausius. Construct a function phi. Phi is any function which is summation pi dot Ri. क्या? What I said? Construct a function phi which is nothing summation pi dot Ri. What is Vi? Momentum. That is what I have explained. Ri is what? Position. This is a function phi. Correct? This function phi may be dependent upon time. Because momentum will change with respect to time. This function is a function of time. This function है होगा कि नहीं होगा? Momentum can change because if there is a force, then momentum will change with respect to time. This function is a function of time. If this is a function of time, only there are two choices for this function. If function is dependent upon time, there are only two choices. Whether it is periodic function or it is a periodic function. If there is something dependent upon time, then I get always the average, correct? So the function is dependent upon time, then average value is calculated over the time period. The function is periodic or function is aperiodic. When the function is periodic, repeats after a time. Function is periodic. If a function is periodic, then I would have written t plus tau. Automatically, what is tau here? Time period. If I can write phi t is phi t plus tau, that means function is a periodic function with the time period tau. What? With time period tau. If it is non-periodic, then what? पहले तो सेटल कर लें. नॉन पीरियोडिक, अगर नॉन पीरियोडिक है इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा बड़े टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है. टाउ इज वेरी लार्ज. If it is aperiodic, I can very well call tau is time period is extremely infinite time period है, तो रिपीट होगा ही नहीं. Very large. Good. Only two situations can happen. Try to understand now. I am doing, take that d phi by dt and take the time average both the sides. ये तो मैंने phi की कैरेक्टरिस्टिक बताई, या तो पीरियडिक होगा या नॉन पीरियडिक होगा. हम देखते हैं. ये गायब कर दिया, ये तो ऐसे ही बता दिया. अब हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? डी फाई बाई डी टी. डी फाई बाई डी टी क्या हो गया? डी फाई बाई डी टी समीशन
dpi by dt dot with ri plus pi dot with dri by dt. गुड. देखिए भैया, ये हो गया समीशन एफ आई डॉट आर आई प्लस ये क्या हो गया भैया, एम आई वी आई डॉट वी आई, एम आई वी आई स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्वाइस ऑफ, ठीक है. एंड दिस इज नथिंग डी फाइव बाई डी टी, करेक्ट. डी फाइव बाई डी टी इज नथिंग समीशन एफ आई डॉट आर आई प्लस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. गुड. Now I said take the time average both the sides. Take the average with respect to time both sides of the equation. इसका टाइम x का टाइम एवरेज कैसे लोगे? अगर x कोई t का फंक्शन, इसका टाइम एवरेज कैसे लेंगे? एक्स टी डी टी अपॉन डी टी, कहाँ से कहाँ तक? ऐसे ही लेंगे टाइम एवरेज. लो इसका टाइम एवरेज देखो, 0 to tau dt upon 0 to tau dt. गुड. इनमें कुछ नहीं किया, इनमें क्या किया, लाइन खींच दी. क्या कर दिया? लाइन खींच दी. लाइन खींचने का क्या मतलब है? टाइम एवरेज ले दिया दोनों साइड. टाइम एवरेज है वाई डॉट आर आई प्लस ट्वाइस ऑफ दिस. व्हाट इज दिस? ये बताओ जी. डी टी कट गया, डी फाई हो गया. डी फाई का इंटीग्रेशन फाई टो माइनस फाई जीरो, फाई टो माइनस फाई जीरो अपॉन टो, फाई टो माइनस फाई जीरो अपॉन टो इज इक्वल टू समीशन एफ आई डॉट आर आई प्लस ट्वाइस ऑफ टी. फंक्शन इज पीरियोडिक, then this is 0. Function is periodic, then phi 0 or is phi tau, repeating. Left hand side is 0. If function is periodic, then left hand side is 0. Good. Then t is nothing minus half of summation f by r. If function is periodic. If function is non-periodic, then also it is 0 because tau is very large. Good. This left hand side is 0 in every circumstances. So nothing, t turns out to be nothing minus a summation fi dot ri. अगर इसको v से लिख दूं, it is minus half v और 2t plus v is 0. This is called virial theorem of Clausius. This is called virial theorem of Clausius. ठीक है जी. So I can always calculate kinetic energy, average kinetic energy of any assembly of particles, provided I know the force acting on the particle. If I know the force acting on the particle, I can easily calculate the kinetic energy. Good. I will apply this to the assembly of ideal gas. I will derive ideal gas equation by the help of this. I am showing the application. And what is t is equal to minus half summation fi dot ri. So I have to calculate in this theorem. What I have to calculate? Virial. What is virial? fi dot ri. Fi is the force acting on the ith particle. What is Fi? I should know this thing.
In kinetic theory of gases, what was the assumption? How kinetic theory of gases we have obtained the ideal gas equation? What I have done? What is ideal gas? Molecules are there in some, filled in some container. Molecules are filled in some container. Let us say container is a cubical box. Container is a cubical box. This is one wall, x is equal to 0. There is another wall, x is equal to L. एक वॉल है ये, एक दूसरी वॉल है, x इज इक्वल टू 0 है और ये क्या है, x इज इक्वल टू L है, समझ लो वॉल है ऐसे, एक वॉल, दो वॉल्स हैं, ऐसी दूसरी वॉल है, ये तीसरी वॉल है, क्यूबिकल बॉक्स है. वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, वॉल्यूम कैसे L हो सकता है भैया, L तो एक डायमेंशन है, वॉल्यूम तो L क्यूब होगा अगर क्यूबिकल बॉक्स है तो. काइनेटिक थ्योरी आप कैसे से मालूम है प्रेशर कैसे एक्सर्ट, हाउ डू वी फाइंड आउट द प्रेशर एक्सर्टेड. So this box is filled with the molecules of an ideal gas. Ideal gas molecules do not interact. Interparticle interaction is 0. Intermolecular interaction is 0 because particles do not occupy any space. They are point particles. And the collisions are elastic. Good. The particle is there, goes and hits the wall. Whole volume is available for molecules to move. What I require? हमें विरेल कैलकुलेट करना है. विरेल में क्या चाहिए मुझे? सिर्फ फोर्स चाहिए. फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल. This particle goes and hits the wall. Some area dA of the wall, delta A of the wall hits. Exerts pressure. Good. So how much force this will exert on the wall? Particle when it will go and hit the wall? P delta A. All molecules are similar. Every molecule will be exerting pressure P on the wall. Interparticle interaction is negligible. There is no interparticle interaction. So आपस में कुछ नहीं हो रहा है. Only they are going to hit the wall. But I am not saying they are hitting the wall. What I require? Force acting on the particle. Good. Shift and collision is elastic. Collision is elastic. So this wall, this molecule hits the wall. Wall remains at rest. Momentum conservation will take place. How much force it exerts on the wall? P delta A. P delta A. P is a scalar, delta A is a vector. So force is delta A. P delta A. Correct? That much force is exerted. That much force is exerted by particle on the wall. So how much force wall will exert on the particle? Minus P delta A, correct? Minus P delta A. That is the force acting on the ith particle. P is the pressure exerted. And all molecules are same behavior, correct? All molecules are exerted. Similar kind of thing other molecule will also do on the walls. So P is the pressure exerted by the molecule on the wall. P is the pressure exerted by the molecules on the walls of the container. That is the net pressure on the molecules. And they are similar for all the particles. So Fi is nothing minus P delta A. P delta A was exerting, so walls are exerting pressure. There is no other force other than due to this pressure. There is no other force acting on the molecules of an ideal gas. Until and unless I know all kind of forces, I cannot calculate this. I cannot use this. I should know the exact nature of the forces acting on the particles. Fi dot Ri. Good. So here I will write P delta A. Right opposite. So I am just going to write. Now this VDL V is minus half summation F dot R. What is it becomes? Minus half minus P delta A dot with R. If I assume that this mass is infinitesimally small, then delta A I will always write in terms of dA. Summation will be replaced by integration. This can be written as minus half summation over the entire surface. Minus minus plus. Pressure is same exerted by all the molecules, can be kept out.
P/2. This becomes R dot dA. क्या जी? R dA dot R means same as R dot dA. Good. This kind of thing will happen. All molecules will hit all the surfaces, all the walls. This is a surface integral over the entire box. 6 surfaces. If there are 6 surfaces, every surface I have to take this R dot dA. Good. R dot dA has to be calculated. P/2. This is virial minus half of F dot R. Virial has been calculated because only force is the pressure exerted by the walls on the molecule. R dot dA. R dot dA I can always convert. Surface integral can be converted into volume integral. तो क्या हो जाएगा जी? P/2 वॉल्यूम इंटीग्रल del dot R dV. Del dot R dV. I have used Gauss divergence theorem. Used Gauss divergence theorem. ठीक है जी. Del dot R dV. What is del dot R? R is xi plus yj plus zk. Del is I del by del xj del by what is it? 3. क्या हो गया जी? 3/2 P. Now dV means what? Total volume. 3/2 PV. टोटल वॉल्यूम कितना आ गया भैया? डेल डॉट आर तो कांस्टेंट हो गया. डेल डॉट आर इज कांस्टेंट. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज कैपिटल V. 3/2 PV आ गया. दैट इज द वैल्यू ऑफ वेरियल अकॉर्डिंग दिस. 3/2 PV. 3/2 प्योर PV. समझ में आ गया भाई साहब? 3/2 PV. This is the calculation of virial. So this is the kinetic energy. Average kinetic energy is what? 3/2 PV. Average kinetic energy 3/2 PV. So pressure कुछ नहीं है, आ गया. Average kinetic energy E turns out to be 3/2 PV. P हो गया तो क्या हो गया? P 2/3 E/V. बहुत बार लिखा है ना, 2/3 E/V. दैट इज व्हाट दिस थिंग. और काइनेटिक एनर्जी वैसे अगर लिखनी होती तो कितनी ज़्यादा, अगर इफाई से कितनी होती टोटल एनर्जी? एवरेज कितना होता जी? क्या होता जी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती? कैसे लिखा जाता? हाँ, m v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर. ठीक है जी. इनको क्या लिख सकता हूँ? n इंटू वी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर एवरेज कैसा लिखा जाता जी? समीशन वी आई स्क्वायर बाई एन. यही लिखते ना? तो क्या हो जाता? हाफ एन वी स्क्वायर. तो प्रेशर का फार्मूला भी निकल गया. प्रेशर एक्सर्टेड पी इज 1/3 एन एम वी स्क्वायर. वी स्क्वायर एवरेज यही किया था ना वहाँ पर. वी स्क्वायर एवरेज इज समीशन वी आई स्क्वायर बाई एन. ये समीशन वी आई स्क्वायर लिख दिया आपको. दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. इसका एवरेज देना है मुझे, इनका एवरेज देना है. So I would have written this term. This is nothing 3/2 PV. So अगर मुझे P लिखना होता तो क्या हो जाता? 1/3 n m v स्क्वायर बाई v, और PV is 1/3 n m v स्क्वायर. करेक्ट? n m v स्क्वायर. What was v square? If I say this is
ये तो कर दिया मैंने, जो यहाँ पर निकालना था मैंने दोनों सब कुछ निकाल के चला गया। फिनिश्ड। दैट वाज द एप्लीकेशन ऑफ Virial theorem of gases. V square, if these molecules obey Maxwell velocity distribution, then V square is nothing. ठीक है भाई, हम आइडियल गैस इक्वेशन भी आ गई जी यहाँ से। PV is 1/3 N M 3kT by M। M से M कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या हो गया जी? N K T। Correct? If it is 1 gram mole, N is in Avogadro number. If it is 1 gram mole, then it is in Avogadro number. PV is equal to RT. Ideal gas equation also I have derived from Virial theorem of Clausius. I can get even for real gas equation also from it, but I should know all kind of forces acting on that particle. You wonder what is the quantification of van der Waals forces, what is the interparticle interaction, is there interaction, dipole interaction, all those things if I know, then I can arrive at even van der Waals equation of state by the use of this thing, a long drawn thing. I should know the all kind of forces acting on a particle. I can calculate the virial. From the virial, pressure can be calculated, and equation of state is nothing, a relationship between PV and T. That was the virial theorem of Clausius. Finished? कुछ नहीं बचा हुआ है, सारा खत्म हो गया। अब सीट खोल लीजिए जी, सीट नंबर 25, सीट नंबर 25 बताइए, पहले बचा गया था जी। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ prove that there cannot be any negative absolute temperature. Why there cannot be negative temperature? Because at ordinary temperature there is always lower population at the higher level. Higher levels are always having lower populations. This is experimentally observed fact. Higher ground levels is having the maximum populations. Good. So until unless population inversion is achieved, an equilibrium state, population inversion has to be also achieved at equilibrium state. Good. Question number 13 is also same. What do you understand by negative temperature? Write and explain various restrictions on the system for the concept of negative temperature to be meaningful. Good. Any other question? Sheet number 25, every question is finished. Sheet number 26, every question is finished. बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखो करके चला गया था पहले ही मैंने। सीट नंबर 26 में कोई क्वेश्चन पूछना है? सारे कर दिए थे, सारे कर दिए थे। सीट नंबर 24 में कोई पूछना है? कर दिए थे ना सारे। सीट नंबर 23 सारे कर दिए थे। सीट नंबर 21 में, गुड, वेरी गुड। सीट नंबर 21 में एंट्रोपी की कैलकुलेशन में 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सीट नंबर 20 में सारे कर दिए थे। देखो 20 हो गया था, 22 सारे हो गए थे। देखो कोई पूछना तो पूछ लो, नहीं तो 21 में देखो। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी TS 21 क्वेश्चन 1। बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया था इसलिए इसको देखो। 1 kmol of an ideal gas, 1 kmol of an ideal gas is compressed isothermally 400 Kelvin to from 400 Kelvin at 400 Kelvin temperature is constant isothermally 100 kilopascals to 1000 kilopascals in a piston and cylinder arrangement. In a piston and cylinder arrangement, थोड़ा ढंग से समझना है। Calculate the entropy change of the gas. कोई फाइट नहीं है। Entropy change of the gas is what? RT. If I take 1 gram mole, then RT ln V2 by V1 is equal to P1 by P2. Entropy change of gas. Change of ideal gas. पूरा डेरिवेशन कर दिया है। Ideal gas. Reversible. Isothermal
इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये तो लिखना जरूरी है। डेल्टा एस अगर 1 ग्राम मोल है, n ग्राम मोल होगा तो NR लिख देंगे। सो योर क्या था, R ln V2 बाई V1, RT ln V2 बाई V1 इज इक्वल टू RT ln V1 बाई V2। 1 मोल, किलो मोल है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। जितने भी मोल होंगे NRT हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल में इतना है तो n मोल्स NRT, किलो मोल्स। गुड, एवरीथिंग इज पावला सॉल्यूशन, इजीली कैन बी कैलकुलेटेड। इसमें तो कोई तीर मारना नहीं है। NRT ln P1 by P2 whole data is given. Good. Calculate review of the gas of the surrounding and the total entropy change resulting from the process. If the process is mechanically reversible, has to be, then only entropy change I will calculate. And the surrounding consists of a heat reservoir of this. Try to understand this point. Here, basically surrounding of the gas. What is the surrounding? Where is the gas? Where is the gas? Gas is not in reservoir. Gas is in cylinder piston arrangement. Cylinder piston arrangement. So surrounding for gas will be cylinder piston arrangement. Good. And cylinder, the gas is there in the cylinder piston arrangement, and outside is the reservoir. Outside is so reservoir here will act as an inverse. Good. Here reservoir will act as an inverse. So what happens? Is there any state change of the inverse? No state change of the universe. Same temperature 400 Kelvin. Out initially also 400 Kelvin. So entropy change of the universe is 0. Logic समझ में आ गया थी? Delta S inverse. What is inverse here? Large capacity reservoir. Reservoir is acting as a universe for it, and there is no state change of the universe. Large heat capacity. So entropy change of universe is 0. If universe is 0, then what is entropy change of universe? What is universe? Universe is your delta S. Universe is delta S system. System is gas plus delta S surrounding or cylinder, whatever you want to call. Surrounding. So what is delta S surrounding? Minus of delta S gas. ठीक है जी, आप पूछो, आपको कुछ पूछना था ना इसमें, तो इसमें ये सिर्फ समझना है कि सराउंडिंग क्या है उसके लिए. वेयर इज द गैस फील्ड? गैस इज देयर इन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट, and that whatever is outside that will be treated here as inverse, and there is no change of inverse, no change of state of the inverse, and entropy changes only when there is a change of state. Entropy is a thermodynamic variable of state. Until unless there is a state change, there is no entropy change. Good. समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1. Then question number 9. Question number 9. This is also repeat question. Question number 9. A body of constant heat capacity Cp and a temperature Ti is put into contact with the reservoir at temperature Tf. Good. Equilibrium between the body and reservoir is established as constant pressure, same pressure. Determine the total entropy change and prove that it is positive for this thing. What happens? A body of constant heat capacity Ti is put into contact with the reservoir at temperature Tf. So what the temperature of the body will become? By the final temperature of the body and at the constant pressure. Question your 9. Delta S. What is net delta S? अरे फार्मूला में पहले डेल्टा एस किसका होगा? डेल्टा एस बॉडी प्लस डेल्टा एस रिजर्वायर.
Good. Assuming the whole process is reversible. So body at temperature Ti, when it is brought in contact with the reservoir at temperature Tf, and they are in thermal equilibrium, then body also becomes at temperature Tf. This goes to Tf. So what is delta S? Body. If unit mass I consider, mass तो नहीं दिया हुआ है ना कहीं, नहीं, nothing. Then simply it is dq by T. Reversible process, dq by T. Where it goes? Ti to your Tf. So it is Ti to your Tf. Cp dt is a slow process. That is how this way it is written. Cp ln Tf by Ti. Cp ln Tf by Ti. This is the entropy change of body. Now what is the entropy change of reservoir? How much heat in a reservoir will lose? Delta S reservoir will be nothing minus delta Q upon what is the temperature of reservoir? Tf. Delta Q by Tf. What is delta Q? How much it is heat it is losing out? Tf minus Ti. समझ में आ गया भाई साहब? रिजर्वायर इन लार्ज हीट कैपेसिटी. गुड. It is losing out. Tf minus Ti. That is losing out. So net entropy change you can just calculate. And this term you have to show. Net entropy change. Just add. Delta S is Cp ln Tf by Ti minus Cp Tf minus Ti upon Tf. Now it has to be written. क्या लिखा हुआ है? It has to be positive quantity. It has to be your positive quantity. It has to be a positive quantity. कैसे कैसे दिखाओगे कि इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी? कहाँ वैल्यू लेके दिखानी पड़ेगी आपको. अगर आप मान लो इसको देखो, आई एम सेइंग लेट अस जस्ट टेक Tf माइनस Ti बाई Tf को x कह दिया मैंने. इसको क्या कह दिया? x कह दिया. तो ये क्या हो गया देखो, 1 माइनस Ti बाई Tf इज x. Tf minus Ti by Tf is x. Then 1 minus Ti by Tf is x. Then Ti by Tf is 1 plus x. क्योंकि वही देखो ये टर्म लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है Tf minus Ti upon Tf. क्या जी? Is less than 1. That data he has given. So I have to use that data. Tf minus Tf by Tf, that is mod of x is 1. So I have written in this format. Ti by Tf is 1 plus x. So here Tf by Ti is minus, correct? So क्या हो गया बताओ? माइनस सी पी एल एन एक्स माइनस सी पी एल एन 1 प्लस एक्स. हाँ 1 माइनस एक्स, करेक्ट. टी आई बाई टी एफ. टी आई बाई टी एफ इज 1 माइनस एक्स, करेक्ट. सी पी एल एफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स minus Cpx, correct? Just rewrite. Just rewrite. This is delta S. So delta S I can take if I take minus x common, take if I take here Cp common, or here minus क्या, nothing, Cp common minus Cp common, then x plus ln 1 minus x, correct? Approximate minus Cp ln 1 minus x. Write down, either you put any value x. X is less than 1. X is your
less than 1 and check this whole value. This will be your positive quantity. करके देखिए यार, कुछ भी x की वैल्यू ले लीजिए. सर एक्सपेंशन से कर लीजिए, इसीलिए एक्सपेंशन. हाँ, तेरे क्या इसका 1 माइनस एक्स का क्या एक्सपेंशन बताओ. माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2. हाँ, ln 1 माइनस एक्स इज हाँ प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर. गलत बताओगे तो नहीं होगा भैया. एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ. करेक्ट, इसलिए लिखा हुआ है. ये सब कट गया, क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया. ये करके लिखना है आपको. क्या करना था, क्या किया. इंट्रोपी कैलकुलेट करना था, डिफिकल्ट नहीं था. बताओ, इंट्रोपी कैलकुलेट करना डिफिकल्ट था, आंसर को मैनिपुलेट करना डिफिकल्ट था. Entropy calculate for calculating, if it is a 10 mark question, for calculation of entropy I would have given only 4 marks. 2 marks for first step, 2 marks for second step, total marks I would have given 4. And 6 marks, I mean 2 extra marks or additional marks, I would have given to demonstrate this, that entropy turns out to be positive with the given condition. They have given the condition that Tf minus Ti, so to get into that format. So Tf minus Ti by Ti, I have Tf in written into this format and demonstrated using mathematics. It is a positive quantity. Any positive x square, any value of x I will take, it is a positive quantity. Good, that is out. Any other question you want to ask, you can ask me. Any other question? थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या है भैया, क्या है जी, बताओ बताओ. It's nothing to do with this seat, try to understand. Nothing to do with this seat. Question number 3. Question number 3. Right now you are in a position to answer every question. Vapor pressure of a substance in solid state is given by. Solid state vapor pressure is given by page 23.03 minus 3754 by T. Let it be. The vapor pressure of Hg, same Hg is given in liquid state. Liquid state. LNP is 19.49 minus 3063 by T. The coordinate of a triple point. Triple point में क्या करना था आपको? Triple point is that point where all the three states coexist. So pressure दिया है, इसको भी pressure दिया है. Equate pressure of both the sides, you will get the coordinates for temperature at the triple point. First point is obtained. What is triple point? All the three states are same. So solid, here solid, this thing is given, here liquid phase is given, both the phase should coincide, that will be the triple point. So equate this, you will get the temperature. Now differentiate. Second part is what is asking? Latent heat of vaporization at the triple point. Latent heat. Latent heat. Latent heat can be calculated. From where latent heat I can calculate? Latent heat is calculated by this formula. dP by dt is L by T, V2 minus V1. Latent heat, correct? So liquid, whenever liquid will convert into your gaseous phase, whenever liquid will convert into vapor, then vapors will always occupy more volume than the liquids. This from here. Whenever vaporization occurs, vaporization means phase change, liquid to vapor, liquid to vapor. V2 is your very greater than V1. So I could have easily written dP by dt is what? L by T V.
ठीक है जी, 10 बार करा चुका हूं, आप यू हैव टू गेट द रिजल्ट बाय यूजिंग द डेटा. When the vapor means what? Phase change, a latent heat is calculated at the phase change, correct? So phase change is taking place. I am considering a case of phase change when liquid is converting into vapor, and when liquid is converting into vapor, then V1, volume of liquid phase, is much smaller as compared to volume of vapor phase. So I can easily write, assume it is an ideal gas, assume it is an ideal gas. या उसको डिफरेंशिएट करें 1/p dp. देखो इससे क्या आ जाएगा जी, यू जस्ट गेट दिस, डिफरेंशिएट फर्स्ट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट द सेकंड स्टेट, डिफरेंशिएट 1/p dp, 1/p dp is what? minus 3063 dt by t square, correct? dt by t square. So I get nothing. dp by dt, when the phase change occurs, dp by dt is 3063 p upon t square, and this must be what? L by t v2 minus your v1. This is v2, that is approximated. So from here you get, तो देखो जी, वैल्यू अप टू गेट, ये डेटा हमारे पास लिखा हुआ है, टी से टी कट गया देखो, एंड टी ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड, टी आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड. सो दिस बिकम्स, you calculate from here, 3063 p into v is, you calculate, here is calculated from here, 3063 p v by t, it is r, assuming it is an ideal gas, r, that is how it could be calculated, dp by this 3063 by p by t, L is calculated from here, that is how L will be calculated from this thing. And it is given as a solved problem in Garg Bansal Ghosh book. It is given as a solved problem in Garg Bansal Ghosh book, if you would have seen even the book. And this is not the part of syllabus. This is not the part of triple point. Triple point is a general standard thing, is an application of Gibbs phase rule. That is how I can define triple point. And if I have to get L, by the help of only Clausius Clapeyron equation, I can get L. There is no other way to calculate latent heats. How latent heats are calculated? By Clausius Clapeyron equation, or if latent heat changes with respect to temperature, then by second latent heat equation. If specific heats are different in saturated phase and others, then latent heat should also change with respect to temperature. If I am using Clausius Clapeyron equation, then I am assuming that the very same way assumption is that CPs are not changing. हर जगह लिखा है ना, CPs are not changing with respect to pressure, CVs are not changing with respect to pressure at constant CP, the heat change is calculated. Same thing here also I am calculating that L is not changing with respect to temperature. So substitute both of them from this formula. Good. Any other question? Any other question? Go to the assignments. Go to the assignments. Assignment 26. Assignment 26. All are derivations other than question number 10. Assignment 26. All are standard derivations. Derive the Bose-Einstein distribution for an ideal gas. Question 1. Question 2. Discuss the phenomena of Bose-Einstein condensation. Obtain the expression for the condensation temperature. Briefly comment on the observation of Bose-Einstein condensate. These kind of questions are very much expected in Indian Forest Service examination because in 2008 syllabus has been revised. Question number 3. Define Fermi energy for an ideal Fermi gas of n particles at absolute zero temperature. At what temperature?
absolute zero. Every derivation has been asked for absolute zero. So that total energy is 3 by 5 NEF, where EF is the Fermi energy. Correct? Question number 4. So that for a distribution of electrons, the number of electrons in energy state EI are given as Ni by Gi J e raised to power EI by Kt plus 1, where Gi represents the number of quantum states in the energy level EI. Further state under what conditions this distribution law goes over to Maxwell-Boltzmann statistics. I have given the condition under what conditions it goes to Maxwell-Boltzmann statistics. So that if by drawing the curves, how Fermi-Dirac distribution function varies with temperature, T is equal to 0 at any temperature, derived. Question number 5. Starting from the expression N is equal to summation Ni, where Ni is the average number of particles in kth quantum state, derive an expression for the average number of particles in the ground state of an ideal Bose system. Ground state of ideal Bose system means Bose-Einstein condensation temperature. Ground state population you have to derive. Ng is N1 minus T by Tb raised to power 3 by 2, the way we have derived. Question number 6. Utilize the above expression to calculate the concept of Bose-Einstein condensation. Should not be asked. Question number 7. Derive the expression for Fermi-Dirac distribution function. Represent it graphically. Question 8. Derive a relationship between the total number of fermions in terms of Fermi momentum. Derive a relationship between the total number of fermions in terms of Fermi momentum, and hence obtain an expression for the total energy of the system at absolute zero. Combine this expression with the equation of state PV is equal to 2 by 3E to show that pressure of an ideal Fermi gas at T is equal to 0 is 5 by 3 power of its number density. कर दिया था जी. Question number 9. So that at T is equal to 0, Fermi distribution function has a value 1 for energy is less than Fermi energy and 0 above it. For a system of non-interacting electrons at T is equal to 0, so that ground state energy of the system is 3 by 5 NEF. Correct? Already I have done. Question number 10. Energy distribution for Ni particles in classical statistical mechanics is given by Ni Gi e raised to power माइनस अल्फा प्लस बीटा EI. बहुत दिनों बाद अच्छे क्वेश्चन आते हैं. वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स. Gi is the single particle states in the ith level using equipartition of energy principle, using equipartition theorem, so that correct thermodynamical interpretation is beta is 1 by Kt. Where alpha beta are constants. Gi is the single particle states in the ith level using equipartition of energy principle, so that correct definition of beta is 1 by Kt. कैसे करोगे जी? हाँ जी, बीटा कांस्टेंट का अलग से रिलेशन आ जाएगा, उसको वापस पुट कर करो. कभी तो ट्राई तो किया नहीं, तो कोर्स खत्म हो गया, ट्राई तो कर लेना चाहिए था. What is equipartition of energy principle? First you have to use equipartition of energy principle. What is equipartition of energy principle? अल्फा में तो कोई फाइट नहीं है आपकी. बीटा आपको निकालना ही निकालना है. अल्फा तो कांस्टेंट है. एनर्जी क्या है जी? AQ स्क्वायर है. इफ एनर्जी इज AQ स्क्वायर, then what is equipartition of energy principle? First of all, energy is AQ square. Then average energy of Kt. This is the equipartition of energy principle. क्या जी? This is the equipartition of energy principle. Correct? एवरेज एनर्जी कैसे निकलेगी जी? इक्विपार्टीशन यूज कर दिया. एवरेज एनर्जी इज हाफ Kt. एवरेज एनर्जी कैसे निकलेगी यहाँ पर?
एन आपको लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करके देखो इसको। इस वैल्यू को इसको लिख दोगे आप के टी, क्या लिख दोगे इसको आप के टी, हियर द आंसर विल टर्न इन टर्म्स ऑफ बीटा। एंड एनर्जी इज ए क्यू स्क्वायर, एनर्जी इज ए क्यू स्क्वायर। अगर एनर्जी को क्यू लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ई क्यू। ये क्या लिखोगे जी, एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑफ के टी and degree of freedom is associated with q, then I have to write number of particles within q and q plus dq, d and q. Every time some other question require thinking, बिना सोचे हुए नहीं होगा, होगा नहीं ये सब करने के बाद भी, जब until unless conceptual clarity is there. आ गया बेटा, आ गया। कैसे कैसे लाया, जीआई को क्या किया, जीआई को क्या किया, हाँ हाँ बोलो बोलो, जीआई को कैसे गायब किया, फार्मूले में तो जीआई लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, निकल गया था, अच्छा ठीक है, गुड। आप बोलोगे, क्या बोल रहे हो जी? सर सिंपल NED इक्वल टू GED e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा बीटा एंड उसका NED का इंटीग्रेशन करेंगे तो इट विल बी कैपिटल M एंड GED को वी कैन राइट 2 पाई v बाय h क्यूब 2m रेज़ टू पावर 3 बाय 2 अंडर रूट e। आ गया उससे, ठीक है, हाँ उससे कांस्टेंट की वैल्यू आके उसको अगर आप वो लोगे तो 3/2 के टी लिखना पड़ेगा यहाँ पर। आप तो समझ नहीं रही, मैं आपको समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कर रही हैं, आप क्या कह रही हैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आपको शायद समझ नहीं आया। हाँ तो कोई आप मैं नहीं समझ पा रहा ना आपकी बात को। आप जो अगर जी का फार्मूला लिख दिया तुमने यहाँ पर, अगर जी का फार्मूला लिख दिया तो 3/2 के टी होगा, ये फार्मूला चेंज आंसर आ जाएगा। अगर आप जी का फार्मूला लिखेंगे तो जी को 1 डायमेंशन में जाना पड़ेगा क्योंकि ये पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पर इस फार्मूले को पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेना पड़ेगा आपको। जी आई अपने आप 1 हो जाएगा, ये ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ई आई क्यू, जी आई 1 हो जाएगा अगर 1 डायमेंशन में जाएंगे, क्योंकि एन क्यू डी एन क्यू मीन नंबर ऑफ पार्टिकल बिटवीन क्यू एन क्यू प्लस डी क्यू। तो जो जी आई है वो दैट फैक्टर विल गो 1। इफ यू विल टेक जी आई स्टैंडर्ड फार्मूला then you have to, here you have to write 3/2 kT, that's it, then 3/2 kT लेने से हो जाएगा। ठीक है जी, है कुछ नहीं, वही एवरेज ही निकालना है।
दैट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है जब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम देन डी एन क्यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल बिटवीन क्यू एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स, वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स, देन ओनली दिस आपके टी विल बी देयर. गुड. हाउ यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 8. ये फर्मी मोमेंटम क्या है जी? What is the definition of Fermi momentum? This is Fe. What is Fe? What is E? What is EF? EF को क्या होना चाहिए जी? PF is Fermi momentum. Fermi energy is that energy below which all states are occupied at absolute zero. So Fermi momentum is that momentum. This is EF. At absolute zero temperature, if I define, then Fermi energy is that energy below which all states are occupied, above which nothing is occupied. Good. And if I would have defined at any temperature T, then at E Fermi energy is that energy at which occupancy is 50%. Chance is 50%. 50% occupied, states are occupied. Good. So if this is EF, then temperature corresponds, this is TF. Temperature equivalent of Fermi energy is TF. Momentum equivalent of Fermi energy is PF. Height is 1 meter or 100 centimeter or 1000 millimeter. All the things are same or not? If height is 1 meter, I can also call it is 100 centimeter. Also I can call 1000 something. I can also convert it in feet also. So Fermi energy is a characteristic by the benchmark. Is a benchmark energy of fermions below which all states are occupied, and above which nothing is occupied at absolute zero of temperature. So anything at that time, temperature, cut off temperature I put temperature equivalent, तो क्या कह दूँ KTF, यही कहा था ना. If EF is there, KTF, TF is Fermi temperature, EF by K, TF is a Fermi temperature, EF by K, correct, EF by K. This I could have written PF square by 2m is a Fermi momentum. So Fermi momentum is that momentum below which all states are occupied at 0 Kelvin, above is nothing. So first of all you have to write down the definition. UPSC asks these kind of innovative questions. ये नहीं लिखना है वहाँ पर, यहाँ पर लिखना है probability of occupation of momentum level P. That is how you have to modify this. Here Fermi-Dirac distribution function is at temperature T, probability of occupation of energy level E. But here you have to write, whenever you will write in terms of momentum, translate. I have just said I translate. FP is the probability of occupation of momentum level P at equilibrium temperature T. Then what is going to happen? E raised to power P square minus PF square upon 2m kt plus 1. This is Fermi distribution function in terms of momentum. This is Fermi distribution function in terms of momentum. Then, and what is FP? What is FP? NP upon GP. यहाँ से शुरू किया Fermi momentum. I will define Fermi momentum at temperature 0 Kelvin is that momentum below which all states are fully occupied according to Fermi-Dirac statistics. This is this. So NP becomes FP. यहाँ से शुरू किया, ये अगला स्टेप लिखा, ये लिख दिया, NP-DP लिख दिया. क्या पूछ रहा हो? Derive relations between total number of fermions. Total number, these are number of fermions between P and P plus DP. यह लिखना है जी NP-DP
is GP, FP, DP. This is GP was, how much was GP? 4 pi V by H cube P square dP. V by H cube 4 pi E square dP into 1 upon P square minus Pf square by 2m kt plus 1. Only three-dimensional motion I have considered. I have not considered any spin motion. If I have to consider a spin motion, then G has to be multiplied by G has to be multiplied by GS. ये G जो है ये GS into GP हो जाएगा जी. If I consider a spin, GS is 2s plus 1. अपने आप नहीं लिख देना वहाँ पर. इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, ध्यान रखना. क्या इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा है, क्या लिखा है? फर्मियंस. और स्पिन बोली नहीं है कहीं. एनर्जी मोमेंटम के टर्म्स में लिखना. तो सिंपली जीपी है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन जीएस. इफ दे फर्मियन देन जीएस वुड स्पिन डिजेनरेसी फैक्टर, देन मोशन इज px py pz and spin motion is also considered in ds. For electron there is a spin motion. I know that for electron is spin motion. For other particles also there is a spin motion, but I cannot write this value as 2 because this value will become 2s plus 1. In that terms only if the spin motion has to be considered. Otherwise here the assumption is that we are not considering any spin motion. Good. So total number of particles में कुछ नहीं, nothing. Total number of fermions n. This integration कहाँ से कहाँ? 0 to infinity. Now he is asking once again at 0 Kelvin. So at 0 Kelvin, as when P is less than Pf, then what is Fp? 1. यहाँ पर भी वही हो गया जी. P is less than Pf, it is 1. P is greater than Pf. तो इसलिए ये सब करना भी मालूम होना चाहिए. अब ब्रोकन दिस इंटीग्रेशन, अगली लाइन में आ गया 4 पाई v बाई एच क्यू 0 टू पी एफ, 0 टू पी एफ कितना जी? dp. So the answer is not to be written in terms of EF. Answer is to be written in terms of PF. होता. That is why answer has to be written. आ गया आंसर. PF cube by 3. That is the total number of fermions. That is the total number of fermions. 4 pi v by h cube, PF cube by 3. ये आंसर चाहिए था यहाँ पर. Combine this expression and उसके बाद क्या निकलना? टोटल एनर्जी. तो उसमें क्या करेंगे जी? टोटल एनर्जी को क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको. EI होती है ना, सिर्फ आपके लिए लिख के दे रहा हूँ. मैं सीधे की एनर्जी कितनी थी? पी स्क्वायर बाई 2m. एक की एनर्जी कितनी थी जी? पी स्क्वायर बाई 2m इंटू NP. तो ये भी हो गया 0 टू PF. So simple value आ गई हो. Whatever the formula was, just write down. That factor FP will become 1. 0 to PF, P square by 2m NP dP. That is what has to be written in terms of this. That is how energy will come. In terms of momentum. In terms of momentum. Energy has been obtained. एनर्जी हैज बीन ऑब्टेन्ड. अब प्रेशर निकालना है तो लिखा ही हुआ है. क्या करना है प्रेशर को? आइडियल गैस के लिए बहुत बार बता दिया. 2/, लिखा ही हुआ है. P इज नथिंग 2/3 E by V. It will turn out to be 10 raised to power 5/3. लिख के बता दिया था. आना वही है यहाँ पर भी. Here also it has to be 10 raised to power 5/3. बट ऐसे करना है.
रटा रटाया डेरिवेशन नहीं चलेगा। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या हो गया? रटा रटाया डेरिवेशन नहीं चलेगा। रटा रटाया करोगे तो 55% मार्क्स दूंगा, दे तो दूंगा, लेकिन कितना? 55%। क्या है? दिमाग नहीं लगाया है। एवरी सर्कमस्टेंसेस माइंड हैज टू बी यूज्ड। ऐसा कोई लिख के देगा, कोई होशियार बंदा ऐसे ही लिख के देगा, पेज भी बचेगा, उसका डेफिनेशन भी क्लियर होगी, मुझे लगेगा दिमाग भी लगाया है अपना, 65% दूंगा। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। हर बार ऐसा ही करता है, छोटी छोटी चीज़ें बदलता है बस, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बदलता है, छोटी छोटी स्मॉलर थिंग्स, एंड दैट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर। फर्मी एनर्जी मालूम है, फर्मी टेम्परेचर रट के बैठे हुए हो ना EF/K के, हर जगह लिखा था ना EF/K इज फर्मी टेम्परेचर, तो फर्मी मोमेंटम नहीं लिख सकते थे? क्या होना चाहिए? अब एनर्जी जब P²/2m है तो फर्मी मोमेंटम क्या होना चाहिए? Pf²/2m। सम अदर पैरामीटर आई वुड हैव रिटन। गुड। किसी का कह देता कि फोनॉन की फ्रीक्वेंसी निकालो, यही चीज फोनॉन में लिख देता। फोटॉन में h न्यू था, वहाँ न्यू में क्या हो जाएगा? फोनॉन हो जाएगी, फोनॉन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो E जो है h न्यू था, वहाँ h न्यू फोनॉन हो जाएगा, न्यू फोनॉन विल बिकम E/h। दैट टर्म्स आई वुड हैव चेंज फॉर फोनॉन। Bose-Einstein distribution. Phonons will also obey Bose-Einstein. Photons are obeying this. Phonons will also obey Bose-Einstein distribution. Smaller things can be changed. Good. Sheet number 26. Sheet number 25 कर दिया था सारा मैंने, तीनों कर दिए थे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। Sheet number 24. एक भी बार देखो, बड़ी बात देखना, कभी भी डिवाई का थ्योरी का डेरिवेशन नहीं पूछेगा, और करने की भी जरूरत नहीं है डिवाई के डेरिवेशन को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द स्टेप्स। आई कैन गिव यू द एनर्जी एंड डिराइव मेनी थिंग्स। लुक, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द डिफरेंसेस इन द assumptions underlying Einstein's and device theory of specific heat. Give schematic plot of CV versus reduced temperature। क्या? T/θE and T/θD। डिवाइड में निकालना तो T/θD। नेचर ऑफ ग्राफ विल नॉट अंडरगो चेंज, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग CV वर्सेस T विल राइट CV वर्सेस T/θD। आप दिस एंड इलुस्ट्रेटेड डिफरेंस theory। Elaborate the meaning of law of corresponding states for these plots. How will you apply law of corresponding states in these plots? Law of corresponding states, how will you apply to these plots? बताओ। And this exam is the exam of connectivity. You will not get this answer anywhere written in any book. आपको बता दूं, किसी किताब में जब एक क्वेश्चन आया होगा, किसी किताब में दुनिया की, इसका आंसर नहीं मिलेगा तुमको, दुनिया की, क्योंकि ये कहीं है ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन सिर्फ कहां से आया है? एग्जामिनर के दिमाग से आया है, कुछ नहीं है उसमें। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कनेक्टिविटी। जैसे अभी मोमेंटम कनेक्ट किया था, कनेक्ट ही तो किया था मोमेंटम को वहां पर मैंने, ऐसे ये भी कनेक्ट, अभी वो भी GI वाले में भी कनेक्ट ही किया था मैंने। अगर आपको पूरा क्लियर था कि इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT, अगर आप जी का फार्मूला लिखेंगे तो √2π जो भी लिखेंगे तब वो 3/2 kT हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना था, उसका बाद आंसर आ जाएगा। एवरेज वैल्यू तो निकालनी है, कुछ नहीं करना। कनेक्टिविटी, ये आल्सो कनेक्टिविटी। बताइए क्या कनेक्ट करना। व्हाट इज लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट? सेम। What was the law of corresponding state? If two gases were said to be in corresponding, when they were said to be in corresponding state, if two reduced parameters are same, if two reduced parameters are same, third was automatically same. If equation of state exists, equation of state exists, two gases are said to be in corresponding state if their reduced parameters are same. Two solids are said to be in corresponding state if their reduced temperatures are same. बताओ, if their reduced temperature are same, then specific heat predicted by a theory will be same. बोलिए भाई साहब, स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंडेंट है? T/θD पे।
इसी पे तो डिपेंडेंट है थीटा डी बाई टी पे। अगर दो गैसेस का, दो सॉलिड्स का थीटा डी बाई टी सेम हो जाए तो स्पेसिफिक हीट प्रेडिक्टेड सेम होगी कि नहीं होगी? They will be said to be in same corresponding state, that means same state of specific heat, either predicted by Einstein or predicted by Debye. गलत होगा आइंस्टीन वाला, डेविएशन दिखाएगा, बट दे आर सेड टू बी इन सेम स्टेट, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट, इफ रेड्यूस पैरामीटर्स आर सेम। ये लिखना है जी, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। सो टू सॉलिड्स, कैसे क्या किया, क्या कहा मैंने? Two solids are said to be in corresponding state if their reduced parameters are, reduced temperatures are same, then they will be having same specific heat, then they can be said to be in corresponding state. Good. All questions I have answered, whole sheet I have, all the sheets I have done. Assignment के भी सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए। 4 भी बज गया है, पूरा टाइम भी खत्म हो गया है मेरा, पूरे कोर्स खत्म हो गए हैं। गुड, 2 टेस्ट हो गए हैं आपके, क्या जी? 2 टेस्ट आपके हो गए हैं, तीसरा टेस्ट होना है, तो कल दे दोगे तो कैसा रहेगा जी? कल दे दोगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म तो कैसा रहेगा जी? परसों दे दोगे? परसों को तो मुझे स्टाफ को अपने बुलाना पड़ेगा। हाँ, कल तो क्लास है आपकी, संडे को दे दो, या अगले संडे कर दूंगा आपका मैं टेस्ट। हाँ जी, क्या जी, क्या कह रही हो? आपको देना है? बोले तो वही बोले जिसको टेस्ट देना है, जिसको देना नहीं है उसको क्या बोलना है? अभी तो क्लास में सभी हाथ उठा के होगा कि नहीं होगा, देना है नहीं देना। कितनों को है टेस्ट? पहले पिछली बार कितने लोगों ने टेस्ट दिया था? अब जिन्होंने टेस्ट दिया था वही बताएंगे टेस्ट कब होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट सैटरडे। चलिए, क्लास एक्चुअली संडे को नहीं होती है तो कोई क्लैश नहीं होगा। चलिए जी, क्योंकि मुझे स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, और संडे को भी मैं उपलब्ध नहीं रहूँगा। सैटरडे को क्या है, आप टेस्ट देंगे तो मैं बैठा रहूँगा, और मेरे आने के साथ ही आधे डर जाते हैं, तो एकदम टेस्ट सही से चलता है। 2 बार आके देख लेता हूँ, आके मैं 2-3 बार आके देखता हूँ मैं टेस्ट के दौरान, और उसके बाद सब अटेंटिवली बैठा रहता है। ठीक है सर, आप अपने हिसाब से मेरे हिसाब से सैटरडे बेस्ट रहेगा, सैटरडे आफ्टर द क्लास, और उससे पहले एक दिन डिस्कशन भी होना है ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो डिस्कशन क्या होना है, आपको वीडियो दे देते हैं ऑप्टिक्स के टेस्ट का, आपको वीडियो शेयर कर देंगे आपके ग्रुप में। डिस्कशन का वीडियो जो है हम आपको दे देंगे, आप खुद से उसको इवेलुएट कर लीजिए, और जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है क्लास में ऑप्टिक्स के। ओके, विल लेट यू शेयर इन द ग्रुप itself. Good, so class is concluded. We will meet tomorrow with a new paper 2.